Welcome to my YouTube channel NEET Explorer. In this video, we are going to discuss factors which affect the enzyme catalysis. एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की कैटालिसिस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, किन चीजों से एंजाइम की कैटालिसिस, एंजाइम की एक्शन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ऐसे सबस्टेंसेस को हम नाम देते हैं फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फैक्टर्स की, दैट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर की अगर हम बात करें, we have already discussed that enzymes are thermoliable. Enzymes are thermoliable, that means they are sensitive to temperature. If the temperature of a reaction catalyzed by the enzyme is increased, अगर कोई रिएक्शन एंजाइम करता है, अगर इस रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, then the rate of catalysis also increases. If we decrease the temperature of a chemical reaction, the rate of enzyme catalysis also decreases. It means enzyme catalysis is directly proportional to the temperature. But if we see the temperature at which enzyme catalysis is maximum, that's called the optimum temperature. जिस टेम्परेचर पे, क्योंकि जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे एंजाइम की कैटालिसिस सबसे ज्यादा होगी. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं जिनमें एंजाइम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. बट वी सी मैमल्स में 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का. सो वी कैन से द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द एंजाइम कैटालिसिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. बट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर हम इस कैटालिसिस, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा इंक्रीज करेंगे, then the catalysis, rate of catalysis decreases. यहां पे rate of catalysis जो है वो decrease हो जाएंगे. The reason being, enzymes are proteinaceous molecules. At high temperature, these enzymes they get denatured. So denaturation इनमें हो जाती है, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नतीजा ये निकलता है कि एंजाइम जो है इट इज अनएबल टू कैटालाइज अ रिएक्शन. इफ वी प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे टेम्परेचर, यहां पे कैटालिसिस जो है वो डिक्रीज ही हो रही है. सो इट मींस यहां से कैटालिसिस हम लेंगे, यहां से टेम्परेचर लेंगे. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, कैटालिसिस इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक जगह पे कैटालिसिस कांस्टेंट रहती है. सो इट मींस दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज optimum temperature. Beyond optimum temperature, the catalysis decreases. Catalysis decrease होती है. So it means enzymes are sensitive to temperature. That's why they are thermoliable. But there are some enzymes which can act at a very higher temperature. For example,
a bacteria called Thermus aquaticus. Thermus aquaticus, a bacteria found in hot springs, contains enzymes that work in a temperature above 90 degrees centigrade. So it means approximately 90 degrees centigrade temperature पे वो catalysis दिखाते हैं. तो लेकिन most of the enzymes जो है उनमें जो catalytic rate जो है वो maximum है to a temperature of this 25 to 40 degrees centigrade. Second one is the pH. pH also plays an important role in the catalysis of an enzyme. Some enzymes, they work in acidic medium, for example pepsin, renin, they work in acidic medium. Some enzymes work in alkaline medium and some enzymes work in neutral medium. If the concentration of hydrogen ion is changed in a reaction, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज होगी, the enzyme catalysis also changes. For example, if we take the case of enzyme that's called as pepsin, it works in acidic medium having pH, we can say almost about 2. So इस 2 to 3 pH में ये एंजाइम सबसे ज्यादा कैटालिसिस दिखाएगा. So for this enzyme, this pH is the optimum pH. So optimum pH, the pH at which enzyme catalysis is maximum is called optimum pH. Here, if we change the pH, it means if we increase the pH from 2, 3, 4, 5, 6 towards the alkalinity, then the enzyme catalysis also decreases. तो इस enzyme की catalysis decrease होती है. So if we increase the concentration of hydrogen ions, so pH कम, lower यानी कि means towards down जाएगा, 7 से नीचे जाएगा. So it means उतना ज्यादा ये enzyme catalysis दिखाएगा. So it means an enzyme works maximum at optimum pH. If we change the pH, the enzyme catalysis also changes. For enzymes, they have different optimum pHs. Like pepsin जो है, इसके लिए optimum pH है 2 to 3. इसी तरह से अगर हम देखें, there are some enzymes whose optimum pH is 7 and there are some enzymes whose optimum pH is 8.8. Like we can say trypsin. Trypsin जो है उसका optimum pH है वो 8.8 approximately है. So we can simply say the pH at which enzyme catalysis is maximum is called optimum pH. Substrate concentration. The concentration of a substrate also determines the rate of catalysis. If we increase the concentration of a substance, the rate of catalysis increases. It means, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, तो एंजाइम्स जो है ये कैटालिसिस ज्यादा दिखाएंगे. एज more the number of substrate molecules, more enzymes will involved in the catalysis. So rate of reaction will increase. But if we continuously increase substrate concentration, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एंजाइम कैटालिसिस में कोई फर्क नहीं रहेगा. इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर हम ग्राफ यहां पे प्लॉट करें, यहां से हम लिखेंगे कैटालिसिस
रेट ऑफ कैटालिसिस, यहां से लेंगे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. If we increase the substrate concentration, rate of catalysis increases as more and more enzymes are involved. But एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के बावजूद कैटालिसिस कांस्टेंट रहेगी. सो इट मींस यहां पे वेलोसिटी जो है इट विल बिकम मैक्सिमम रेट. इट्स कॉल्ड एज V max. सो मैक्सिमम वेलोसिटी इस रिएक्शन की. अब यहां पे व्हाट इज द रीजन इफ वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये यहां पे कांस्टेंट क्यों आ रहा है? जब हम इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब सबस्ट्रेट ज्यादा अवेलेबल है एंजाइम्स के लिए, ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के साथ बाइंड करेंगे. इट मींस द रेट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. बट एट दिस पॉइंट now all the enzymes are engaged in catalysis. यहां पे हर कोई एंजाइम कैटालिसिस में एंगेज है, कोई भी एंजाइम अब फ्री नहीं है. सो इट मींस अगर हम सबस्ट्रेट इंक्रीज कराएंगे, यहां पे कोई एंजाइम नहीं है जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में. ऑल द एंजाइम्स दे आर ऑक्यूपाइड. सो नतीजा ये निकलेगा, रिजल्टिंग इन द ग्राफ इट विल बी पैरेलल. सो इट मींस at this point the velocity of the reaction that will be maximum. It's called as V max. And at what substrate concentration we get half of this maximum velocity. इस maximum velocity का हम half किस substrate concentration पे हासिल करेंगे? Suppose this is substrate concentration. At this substrate concentration, the velocity maximum is half. So it is, we can say, V max is half here. So at the substrate concentration, where V max is half, this substrate concentration is called Km, where Km is called Michaelis Menten constant. Michaelis Menten constant gives us an idea about the affinity of an enzyme towards the substrate. तो enzymes की affinity क्या है substrate के लिए? So जितने substrates की concentration यहां पे हम देखेंगे, अगर substrates जो हैं इनकी concentration कम है तो enzyme की catalysis कम होगी. एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट के साथ कम बाइंड करेंगे. अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे एंजाइम्स के साथ. सो द एफिनिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट ऑफ एन एंजाइम इज डिपिक्टेड बाय दिस कांस्टेंट. सो दिस Km, it's called Michaelis Menten constant. इसको Michaelis Menten constant कहा जाता है. This gives us idea about the affinity of an enzyme towards the substrate molecule. So फिर से मैं बता रहा हूं, the substrate concentration at which the velocity maximum becomes half. यहां पे velocity maximum है क्योंकि यहां पे हर कोई एंजाइम एंगेजेड है, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा. अब ये वेलोसिटी यहां से यहां तक मैक्सिमम बनी. अब किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ मुझे मिल जाता है? दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड Km, Michaelis Menten constant. Michaelis Menten constant gives us an idea about the affinity of an enzyme towards the substrate. Product concentration. The rate of enzyme action also depends upon the product concentration. अगर कोई रिएक्शन कैटालाइज होती है तो कैटालाइज के दौरान ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में. सो एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, अल्टीमेटली एंजाइम और प्रोडक्ट मिलेगा. जब यहां पे प्रोडक्ट बना, इफ दिस प्रोडक्ट गेट्स एक्युमुलेटिंग,
अगर ये प्रोडक्ट एक्युमुलेट हुआ, इंक्रीज हुआ, then the rate of enzyme catalysis will decrease. So it means if the concentration of products increases in a cell, then the rate of catalysis decreases. But if the product is constantly removed, अगर ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली रिमूव किया गया, इट मीन्स प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को रिमूव किया गया, फिर बना, फिर रिमूव किया गया, सो रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस विल इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट inhibits the enzyme catalysis. The next one is inhibitors. Number of substances that decrease the catalysis of a reaction. बहुत सारे substances एंजाइम की कैटालिसिस को डिक्रीज करा देते हैं, उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, हमारे पास अगर हम बात करेंगे मर्करी है या हेवी मेटल्स जो है, वो यूरियस की एक्टिविटी को इनहिबिट करा देते हैं. दैट मीन्स दे आर नेगेटिव मॉडिफायर्स ऑफ द एंजाइम्स. सो इफ द इनहिबिटर concentration is more, the enzyme will bind more to the inhibitor molecules. It means when a substance is bound to the inhibitor molecules, the enzyme catalysis decreases. Sometimes there are some inhibitors which bound permanently with the enzyme. So these enzymes lost their catalytic activity forever. So we can simply say the inhibitors also play an important role in catalyzing a reaction. If the enzymes are subjected to inhibitors, अगर enzymes को inhibitor दिए जाएंगे, ये inhibitor enzyme के साथ bind कर सकते हैं either by competitive inhibition, non-competitive or uncompetitive inhibition. That's discussed in the next video. And similarly, the enzyme catalysis may also get affected. So these are some of the factors which influence the rate of a reaction by the enzyme.